So, although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. So इससे पिछले paragraph में he has explained about the creation of earth and about the beginning of life on earth कि simple organisms से unicellular थे, उन्होंने gradually multiply किया, complex organisms बने, further complex, फिर amphibians, birds, then mammals, and then at last man was born. So ये Darwin's theory of evolution उसको भी hint दे रहा है ये. Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. So, we now, of course, ये question तो philosophic है कि we question our existence. यहाँ उसने existential questions भी उठाए हैं. So, standing on our little grain of sand, अपने रेत के छोटे से जर्रे पे metaphorically उसने अर्थ को बोला है कि हमारा रेत का छोटा सा जर्रा, यानी कि हम पूरी कायनात में हम एक छोटा सा जर्रा हैं, क्योंकि there are millions of stars. और हम कोशिश करते हैं we try to discover the nature and purpose of the universe कि क्यों बनाई गई कायनात और क्या मकसद है इस कायनात का, which surrounds our home in space and time, जो कि सराउंड कर रही होती है हमारी घर को और हमारी स्पेस को. तो definitely we as Muslims believe that earth and the universe, it has been created by Allah Almighty, and we human beings have actually the main purpose here is to serve mankind and obey God, Allah Almighty. ये हम जाहिर है as Muslims हम ये believe करते हैं. बट ये डेफिनेटली जब ये थ्योरी आ जाती है बिग बैंग थ्योरी, तो एग्जिस्टेंस जो है उसको किस तरह से फिर हम उसकी लॉजिक दें, यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं. बट आवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर. फियर के बारे में एक क्वेश्चन भी है एक्चुअली, वो आप यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे बल्कि मार्क कर लें. ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाई इज द यूनिवर्स of which our earth is a part so frightening? Give as many reasons as you can. Coming back to the paragraph, we find the earth frightening because of its immense distance. So यहाँ पे number 1 है immense distance. Reasons अगर पूछे गए हैं तो you can mark immense distance number 1, which we do not understand. Frightening because of the stretches of time are so great that we cannot imagine them. Number 2 reason ये हो गया. Making the whole of human history so very small in comparison. And ठीक है, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हैं कि होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो छोटी लगती है कि इंसानों के पैदा होने से पहले भी टाइम था और बाद में भी है, अब भी है और बाद में भी रहेगा. ये रीज़न है नंबर 2 रीज़न. फ्राइटनिंग बिकॉज इन डिस्टेंस हो गया, इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम हो गया. नंबर 3 रीज़न है फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस. Yes, we do not find signs of life in any other planet except the Earth, and because of the littleness of our home in space, we are so little. Earth is a very small planet. बाकी planets इससे बड़े भी हैं, the suns हैं जो इसके size में बहुत बड़े हैं इसके size में. A millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world. Above all else, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life can exist, that life like our own exists anywhere in it except on the earth. यहाँ पे सारा आपको उसका आंसर मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का. पॉइंट्स में आप इसको कर सकते हैं और डेफिनेटली वो सारे प्रॉपर सेंटेंसेस के साथ. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. So, he's saying कि empty space यानी सन से जो दूर हिस्से हैं वो बहुत सर्द हैं. डेफिनेटली जो एरिया सन के पास या दूसरे स्टार्स के पास है वो बहुत हॉट होगा, लेकिन जो बहुत दूर हैं एरियाज वो ऐसे हैं कि वहाँ पे तो जिंदगी जम जाए, बहुत सर्द है. मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल. और कुछ एरियाज इतने गर्म हैं कि वहाँ जिंदगी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती. लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स which produced our planetary system. और लगता है कि जिंदगी का कोई प्लान ही नहीं था इस यूनिवर्स में, हमारे पूरे planetary system में, because Earth is the only planet in which life exists. Calculation shows that there can be only very few such systems in this space.
और ऐसे सिस्टम जैसे हमारा सिस्टम है ये सोलर सिस्टम और ये अर्थ के जैसे कोई होना कि वो उसी एग्जैक्ट डिस्टेंस पे हो, उसी सन से उसी बेल्ट पे रोम अबाउट कर रहा हो, ऐसा होना बहुत ही रेयर है. Yet so far as we can see, life of the kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. जैसी लाइफ हम अर्थ में देखते हैं वो सिर्फ अर्थ में ही एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि सुटेबल कंडीशंस नहीं है और जगहों पे लाइफ के एग्जिस्ट करने की. Yet so far as we can see, life of the kind we know on Earth can exist on the planet. It needs suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is a temperature at which substances can exist in a liquid state. सो टेम्परेचर सुटेबल होगा तो ही ज़ाहिर लाइफ एग्जिस्ट करेगी, और कहीं और जाएं अर्थ से बाहर तो सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिलता लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए. सो स्टार्स themselves आर फार टू हॉट फॉर दिस, और ज़ाहिर जो स्टार्स हैं, द सन इज ऑल्सो अ स्टार, दे आर एक्सट्रीमली हॉट, नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन देम. सो लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, और लिक्विड स्टेट में भी जहाँ चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हों. वी नीड वाटर टू एग्जिस्ट, वी नीड सुटेबल टेम्परेचर, वी नीड फूड. वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस. तो ये सन की और स्टार्स की बात हो रही है कि वो जो हैं एक्चुअली दे आर अ कलेक्शन ऑफ फायर्स विच आर स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, providing warmth in surroundings where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero, that is about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale. So कहीं पे बहुत गर्म है और कहीं पे टेम्परेचर जो है वो बहुत सर्द है, यानी कि suitable temperature नहीं है for life to exist. In the immense stretches of space beyond the Milky Way, it is colder still. और मिल्की वे कहते हैं ये हमारी जो प्लानिटरी सिस्टम है सारा, ये पूरी हमारी सन का जो सिस्टम है सोलर सिस्टम, इससे बाहर चले जाएं तो इट्स वेरी कोल्ड. एंड फ्रॉम द फायर देयर इन दिस unimaginable, and away from the fires there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. Close up to them there is a temperature thousands of degrees at which solids melt or liquids boil. तो ये इनके करीब आ जाएं सन्स के और स्टार्स के तो बहुत शदीद गर्मी है, और अगर दूर चले जाएं तो बहुत ही शदीद ठंड है. So life can exist in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. और ये जो जितने भी सन स्टार्स नजर आ रहे हैं, और जैसे हमारा सन एक स्टार है, अर्थ जो है वो इससे एक सुटेबल डिस्टेंस पे है कि इट्स नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इट हैज गॉट द एग्जैक्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. दूसरे सन्स के साथ एक्चुअली इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि दूसरे जो स्टार्स हैं जरूरी नहीं है कि उनके साथ कोलिजन हुई हो किसी और स्टार की, इस तरह से प्लैनेट्स टूट के बिखरे हों, और अगर कोलिजन हुई भी है तो जरूरी नहीं है कि वो उसी डिस्टेंस पे हों जिस डिस्टेंस पे अर्थ है. दैट इज वाई सो फार वी ओनली नो दैट लाइफ एग्जिस्ट जस्ट ऑन अर्थ. Outside these belts, life would be frozen. Inside it, it would be burnt. और ये जो बेल्ट है, ये जो suitable बेल्ट जिसकी बात हो रही है, जो अर्थ की जैसी बेल्ट है, इससे और थोड़ा सा करीब आ जाए लाइफ जो है वो बर्न अप हो जाएगी, और सन से थोड़ा सा और पीछे को चले जाए लाइफ इज फ्रोजन. So our Earth is the only planet which is at the most suitable distance from the sun. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. So rough calculations show कि इस तरह की जो बेल्ट है हमारे जैसी, वो 1,000 millionth में से हो सकती है कहीं अगर हुई भी स्पेस में, otherwise there is no chance. And even inside them, life must be very rare, for it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. वही बात के किसी planet के ऊपर इस तरह से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर planet के साथ collision हो, दूसरे हर sun की collision हुई हो किसी और star के साथ, एक star दूसरे से टकराया हो और इस तरह से. This is what Sir James Jeans is saying. Probably only one star in 100 millionth has a
planet going around it at the right distance for life to be possible on it. Now वो possibility discuss कर रहा है of about life कि वो किसी और planet पे किसी और star के पास कोई ऐसा planet हो जो Earth के distance पे हो, ये बहुत ही rare chance है. This is what he is saying. So life exists just on our Earth as far as we know. Question number 1. How is it that a star seldom finds another star near it? And you know its answer. A star seldom finds another star near it because it is because one star is millions and millions of miles away from another star. Yes, a simple answer. Question was, how is it that a star seldom finds another star near it? A star seldom finds another star near it because one star is millions and millions of miles away from another star. What happened when, according to Sir James Chance, a wandering star wandering through space came near the sun? Short थोड़ा सा दे दें, लेकिन कहीं ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा long भी इसका आंसर आप दे सकते हैं. According to Sir James Chance, when a wandering star wandering through space came near the sun, it raised a mountain of tides on the surface of our sun. और वो आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको भी. ये थर्ड और फोर्थ का आंसर भी इसी में आप ऐड कर सकते हैं अगर सपोज सिर्फ यही क्वेश्चन आए कि as the star came nearer and nearer, the mountain of tides on the surface of the sun rose higher and higher, and as the star began to move away, the mountain of tides broke into pieces, and those pieces started revolving around the sun and are known as planets. Although कि ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आंसर दिया है ये डिवाइड होके आया हुआ है 2, 3, 4 में, बट आप क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर आपको आ जाए तो इसमें सारी स्टोरी आप ऐड कर सकते हैं ना शॉर्ट वे. व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर. अगर इतना सा है क्वेश्चन तो अभी लिख रहे हैं आप अपनी रजिस्टर्स पे, तो आप उसको जस्ट इतना आंसर तो इतना ही बनता है कि when a wandering star came nearer and nearer, the mountain of tide on the surface of the sun rose higher and higher. लेकिन इनकम्प्लीट लुक देगा अगर ये बोर्ड में आ गया. थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी इसमें मिक्स करना पड़ेगा. आई मीन टू से कि अगर क्वेश्चन 2 आया है आपको तो उसमें आप थोड़ा सा 3 और 4 का आंसर भी ऐड करके देंगी इन योर बोर्ड एग्जाम्स. और अगर 3 आ गया है तो जाहिर उसमें 4 का आंसर भी मिक्स करके देंगे तो वो फिर ज़्यादा कंप्लीट सेंस बनेगी उसकी. What are the planets and how did they come into existence? इसमें आप शुरू से बताएंगे, 2 और 3 का आंसर भी बताएंगे कि ये जो wandering star वाला पूरा उधर से 2 का आंसर, 3 का आंसर, और what are planets and how did they come into existence? Planets are the broken pieces of the sun. They came into existence when a wandering star wandering through space came near the sun, and it raised a mountain of tides on the surface of the sun. When this new star started moving away, its gravitational pull toward the mountain of tides formed on the surface of the sun, and as the mountain tore into pieces, those pieces started revolving around the sun and they are called planets. पूरी मतलब I mean to say 4 के आंसर में 2 और 3 का आंसर भी शामिल होगा. 5. Why is there no life on the stars? You already know that stars are like burning balls of fire. They're extremely hot for any kind of life to exist on them. Simply बस इसका ये आंसर देंगे आप कि बहुत गर्म है वो, constant उनमें explosions हो रही हैं and they're extremely hot. Write a note on the beginning of life on Earth. इसका आंसर वही आपका इस पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ में बिल्कुल लास्ट साइड में आ जाता है कि one of the planets began to get cooled down to the right temperature and gave birth to life. Life started in simple organisms. These simple organisms had the ability to reproduce before dying, and gradually these organisms became more complex, and gradually human beings came into existence. Universe is frightening वो हमने डिस्कस किया है पीछे उसके पॉइंट्स हैं. What in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies?
So what do such conditions generally exist? What are the conditions necessary for life to exist? In easy words, question 8 में पूछा है. We know that suitable temperature is the most essential requirement for life to exist. After that, it's water, food, which we need to exist. Do such conditions generally exist? No. Such conditions do not exist. We do not find signs of life on any other planet except the Earth. So, suitable temperature, suitable water, and food, nutrition, food are the, you can say, conditions necessary for life to exist. All right.